फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and a very warm welcome to all our viewers of CricketNext. You are watching Morning Bulletin with me, Kanabali, and you must have seen the thumbnail and the title of the video. And it is a good news for all the Indian fans, but we will come to the Shubman Gill news later. We'll start with the South Africa versus Australia match जो कल हुआ. साउथ अफ्रीका काफी अच्छे फॉर्म से आ रहा है, उन्होंने अपने मैचेस जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हारकर इस मैच में आ रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, द टीम दैट वी नो, the team that plays dominant cricket in World Cup, has probably lost its charm. अगर हम पिछला दो मैच उनके देखें तो I'll give you the basic summary जो कल हुआ. First of all, South Africa obviously won the match by a huge margin by 134 runs. South Africa came out to bat first and they scored 311 for 7 wickets in their 50 overs. And pick of the batter again on your screen you can see Quinton de Kock scoring his second consecutive century of this World Cup in two matches, and he was obviously the player of the match. He scored 109 of 106 balls, and he set the tone for South Africa to build up a chase, to build up a target of 311, and Aiden Markram aided him, helped him in reaching that target. Markram scored a good 56 of 44 balls, and these two batters were the pick of the batters for South Africa, and they made sure that South Africa had a good, decent total on the board. But many fans were expecting that Australia will come out and probably chase it down because they'll not be as bad as they were against India when they scored 199 while batting first. But that was not to be. Australia came out and they could only manage 177, which is obviously lesser than what they could manage against India in the first match. As you can see the scorecard on your screen, I mean, all shambles, because Marnus Labuschagne was the only batter who scored above 40, I mean 46 runs, Marnus Labuschagne, and then after Marnus Labuschagne, Mitchell Stark, who's the bowler, he came out and scored 27 runs, and basically helped Australia to somehow reach a score of 177. But this is a big loss for Australia, because this is the second consecutive loss and fourth consecutive World Cup loss if we consider the last two matches of last year's World Cup, last time's World Cup, last edition of the World Cup. So things are not that good for Australia. Kagiso Rabada was the pick of the bowlers from South Africa. He bowled 8 overs. He took 3 wickets, giving away just 33 runs. He has been bowling well. Lungi Nagidi, he has been bowling well. South Africa is looking a very tough team to beat, और ये काफी important है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका से हमेशा एसोसिएट किया जाता है कि वो somehow सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेंगे तो they will eventually choke. Sorry, but this time it looks like South Africa is they do mean business, because the way they are playing in this World Cup, especially the batters, Quinton de Kock, I mean, two consecutive centuries for the opener, and this is his last World Cup. He has already said that he'll retire from the ODI format after this World Cup to focus on just T20s. So maybe he is making a mark. जाते जाते वो अपनी वो कहते हैं ना छाप छोड़ के जा रहे हैं. क्विंटन डी कॉक जिस तरीके से वो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड, they'll have to pull their socks up, because 7 matches left and they'll have to win at least 6 out of them, out of those 7 to make a mark, to somehow be in contention for the semi-finals. I mean 7 में से 7 जीत लेंगे तो थोड़ा और चांसेस बढ़ जाएंगे, बट 7 में से 6 जीतने तो बहुत जरूरी है. और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, मैं हमेशा से कहता था कि they know how to play World Cups, they know how to win World Cups, but this year in this edition they have not started well. 2 मैच हुए, एक इंडिया एक और साउथ अफ्रीका, और दोनों मैच वो हार गए हैं. एंड ऑस्ट्रेलिया वुड बी लुकिंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर नाउ. Pat Cummins, the skipper who is leading the Australian side in his first ever
ODI World Cup will be looking to make a good and great grand comeback now, because run rate is also an issue. If I show you the table stands like the South Africa, you can see, I mean, the run rate that South Africa has, uh, plus 2.360. That's a huge margin for any team. And then New Zealand comes second, and then India, and then Pakistan. Uh, the common thing between all the top four teams is the 4 points each for all the teams, but it's the net run rate that is doing the trick for South Africa and New Zealand at the top two. South Africa, as I said, winning by a huge margin will always help you, because the towards the business end of this World Cup, you will see certain permutation and combination, and eventually maybe net run rate will also come into play to decide which will be the third or the fourth team to qualify into the semis. So this is something that all the teams, especially Australia, who have lost their first two matches, will need to keep in mind. A, they'll need to win matches, because that is what the team requires, and B, they'll have to also improve their run rate in that process. So all in all, a good match for all the fans. The South Africa did put up a show. It was pretty one-sided. I mean, people were expecting, fans were expecting कि दो बड़ी टीमें हैं, थोड़ा थ्रिलर नेल बाइटिंग मैच होगा, लेकिन unfortunately that was not to be. South Africa came out victorious with a huge margin of 134 runs. Quinton de Kock, player of the match, for his innings of 109 of 106 balls. Moving on to the next piece of news. काफी काफी कुछ पूछा गया था वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले. फैंस पूछ रहे थे कि ओपनिंग सेरेमनी होगी या नहीं होगी, वर्ल्ड कप के लिए क्या है, कोई इवेंट है जो हर बार हम आईपीएल डब्ल्यूपीएल में ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं. ओपनिंग सेरेमनी तो खैर वर्ल्ड कप की नहीं हुई, लेकिन बीसीसीआई हैज announced a pre-match musical performance live show before the India vs Pakistan match tomorrow, that is 14th of October in Ahmedabad. And BCCI has lined up musical performances of India's biggest singers and musicians, and the list includes Arijit Singh, Shankar Mahadevan, and Sukhwinder Singh. These three singers will grace the field, and they will do a live performance before the match tomorrow. And it feels like this event will is kind of an opening ceremony, although it's happening after a few matches, after 9-10 odd matches, so it doesn't connect the two, but it feels like this might be the opening ceremony that the fans needed. Needed an event. They wanted to see a grand opening ceremony for the World Cup, but they'll have to do with this. And the security in Ahmedabad, I mean, you can imagine India और पाकिस्तान का मैच है. पाकिस्तान की टीम पहली बार अहमदाबाद आई और स्टेडियम में खेले. जिस तरीके की सिक्योरिटी है, कम से कम 11,000 सिक्योरिटी मेंबर्स फ्रॉम गुजरात पुलिस टू एनएसजी कमांडोज टू रैपिड एक्शन फोर्स, सब पूरी यूनिट सिक्योरिटी के मिलके अहमदाबाद को करो. कल हमने विजुअल्स देखे, जो इंडियन टीम जब अहमदाबाद सॉरी लैंड करी, वहां से होटल तक गई, स्टेडियम के बाहर इतनी पुलिस फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल टू द स्टेडियम, हर जगह काफी स्ट्रॉन्ग पुलिस है, काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है. और ये बताता है कि कितना कितना बड़ा मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच. आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन how big a match India versus Pakistan is, but the fact that BCCI has gone for a pre-match live show with famous and good singers, including Arijit Singh, Shankar Mahadevan, and Sukhwinder Singh, it shows that BCCI wants to put up a show before the India vs Pakistan clash. PCB chief Zaka Ashraf will also be present in the stadium tomorrow to see the match. And this is not his first time in India. He also visited India during 2012 and 13 when he was again the chairman of the PCB, and he came here to see the series India versus Pakistan. And this time around, on BCCI's invitation, Zaka Ashraf, the PCB chief, is coming to India. Will be coming to India for tomorrow's game. So it will be a great event. The way BCCI has planned up things, the shows, the singers, the favorite singers from Arijit, Shankar to Sukhwinder Singh. The stadium will be lit up quite early from we expected, because we expected the match to start at 2 and then slowly the hype getting bigger. But the event will start much sooner than that. Um,
Coming on to our last piece of news, and this is the news I'm pretty sure you all have been waiting for, and that is a very very good news for all the cricket fans. शुभमन गिल ने अहमदाबाद में नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है. कल जब वो अहमदाबाद लैंड हुए, उन्होंने नेट्स पे गए और उन्होंने 1 घंटा करीब प्रैक्टिस की है. विल ही प्ले द मैच और नॉट, दैट इज नॉट श्योर. अभी वो किसी को नहीं पता है. वो टीम मैनेजमेंट नोज द बेस्ट. They are looking at him. They want him to recover well on time, and the main point being recover well. जल्दी रिकवर करने के चक्कर में कहीं उनकी इंजरी और एग्रीगेट, कहीं उनकी बीमारी और बढ़ गई, तो दैट विल बी ए ह्यूज लॉस टू द टीम, क्योंकि अभी वो कुछ मैचों के लिए बाहर हुए हैं. लेकिन अगर बाई चांस जल्दबाजी में अगर बीमारी और बढ़ जाती है तो वो और कुछ मैचों के लिए बाहर हो जाएंगे. बट द साइंस आर गुड कि शुभमन गिल ने कल जाकर नेट्स में 1 घंटा करीब बैटिंग की, और जो वहां पे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स थे उन्होंने भी कंफर्म किया कि कल करीब 11 बजे, सुबह 11 AM के करीब शुभमन गिल आए थे. उन्होंने 1 घंटे तक थ्रो डाउन लिए हैं, स्पेशली नेट पे, और कुछ जेंटल ऐसे नॉकिंग नहीं की. उन्होंने प्रॉपर शॉट्स मारे. हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है साहिल मल्होत्रा, जो इस समय मौजूद है अहमदाबाद में, उन्होंने कल हमें बताया, आप देख सकते हैं क्रिकेट नेक्स्ट पे वीडियोस, के उन्होंने सिर्फ ऐसे नॉकिंग नहीं की जो एक प्लेयर यूजली इंजरी या किसी इलनेस से आके करता है. उन्होंने प्रॉपर शॉट्स खेले हैं. और जो पिच क्यूरेटर है, उन्होंने कहा वी वर टोल्ड अबाउट इट इन द मॉर्निंग एंड वी प्रिपेयर्ड द नेट फॉर शुभमन गिल. वी वर नॉट इनसाइड व्हेन ही वाज बैटिंग बट कुड हियर द साउंड ऑफ द बैट. जो पिच क्यूरेटर है, उन्होंने कहा कि हमें सुबह ही बता दिया गया था कि शुभमन गिल आ रहे हैं, उनके लिए एक नेट प्रिपेयर करना है, क्योंकि काफी लाइन में नेट होते हैं और एक नेट जल्दी प्रिपेयर करना है. कल इंडियन टीम को कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं था क्योंकि कल ट्रैवल डे था. आज इंडियन टीम प्रैक्टिस करेगी और कल स्पेशली शुभमन गिल के लिए एक नेट अरेंज करवाया गया है. उस नेट को फिजिबल करवाया गया फॉर हिम टू कम आउट एंड प्रैक्टिस, एंड दीज आर गुड साइंस for the Indian team, for the Indian fans, because everybody is waiting for Shubman Gill to wreak havoc on bowlers. जिस तरीके से इस साल हम देखते हैं जैसे वो बैटिंग करते हैं, everybody wants Shubman Gill back in the side as soon as possible. But dengue is something that needs time to recover, so we hope that he joins the team only when he is fully recovered, because वो वापस अगर kick in हो गया तो it might affect Shubman Gill. But really good news for all the fans that he is back in the nets. We'll have to wait and see again. Will he be back on the field tomorrow or not? If not tomorrow, then probably the next match, that is on 19th. But we'll have to wait and see. We'll have to wait and see if the fans' wish come true and we get to see Shubman Gill playing against Pakistan tomorrow. It is a big match. They need all the weapons in their arsenal, and so Shubman Gill is someone who has been in form of his life. Ishan Kishan, although he didn't do anything wrong apart from the first match, but Shubman Gill is the designated opener, and the team would love for him to come out and open tomorrow. But उसकी official confirmation हमें कल तक ही शायद मिलेगी, और we'll let you know जैसे ही कोई भी और अपडेट आती है शुभमन गिल के हवाले से या किसी और हवाले से. तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है साहिल मल्होत्रा अहमदाबाद में, he will let you know कोई भी अपडेट्स आएंगे. So please subscribe to the CricketNext YouTube channel, hit the bell icon, follow us across all our social media platforms, be it Facebook, Instagram, Twitter, Thread. अपना कोई सवाल हो हमें भेजिए, अपना कोई ओपिनियन हो हमें भेजिए. We are more than happy to take all the questions that you have. And सब्सक्राइब करेंगे, अगर हिट करेंगे बेल आइकन को, तो आपको पता चलेगा जब हम लाइव आएंगे. और एंजॉय करिए मैचेस. आज है न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच चेन्नई में, और कल है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा जो कहा जाता है the biggest match in world cricket, India versus Pakistan in Ahmedabad. So do tune in for that. और अगर आपके मन में जैसे मैंने कहा कोई सवाल है, कोई ओपिनियन है, please feel free to write in the comment section down below. Until then, please take care of yourself and have an amazing day today. Thank you so much. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.